अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं। एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एजाइल एजाइल का वर्ड मैं आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा। एबिलिटी टू मूव क्विकली, स्पीड और स्मार्टनेस को इकट्ठा करें तो एजाइल एजिलिटी बनता है। आपके स्पीड के साथ स्विफ्टनेस जिसको कहते हैं नॉर्मल लाइफ में, कि जहां स्पीड और स्मार्टनेस को इकट्ठा कर दिया जाए, दैट्स कॉल्ड एजिलिटी। उसको बिजनेस टर्मिनोलॉजी में जहां एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, वो क्या चीज है, वो किस तरह डिफरेंट है कन्वेंशनल तरीके से जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होती थी, वो उसके लिए आज जो हमारे स्पीकर हैं सैयद फरहान महमूद साहब, डायरेक्टर एचआर डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। फरहान जो है वो सर्टिफाइड केपीआई प्रैक्टिशनर है, केपीआई इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया से, क्वालिफाइड एसोसिएट चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट यूके से हैं, वेल राउंडेड एचआर पर्सनालिटी। एचआर की फील्ड में फरहान महमूद इज बिग नेम, और उनके डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस है। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो क्या है, कैसे है, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड से क्या डिफरेंस है। इसके लिए फरहान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, और हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए आप इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें डिटेल बताएंगे, तो प्लीज ओवर टू यू। Thank you, Khurram, for inviting me on this event. HR community or non-HR community, because I'd been into HR for over 25 years, Pakistan and outside Pakistan. I think जो major challenge इस वक्त हमारे conventional performance management में आ रहा है, we are waiting for an year to pass and then देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, तो एक तो I think the whole concept needs to go back to more transactional approach. Over the last few years अगर हम इस वक्त देखें तो business continuity, business challenges, business transformation, multiple ऐसी चीजें हैं जो हमें गाहे बगाहे बता रही हैं कि things are not that stable and things need to be seen in a different perspective. अच्छा, अब जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की इन बिगर पिक्चर बात करते हैं तो हम कहते हैं जी स्ट्रेटेजी क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। ओके, वेरी गुड, गुड थॉट्स for a very organized, mature businesses, right? But when it comes to not that mature businesses, right? What is happening? You start from a transaction, you start from a small thing, and you grow to a bigger perspective. Just few minutes before, I was telling Khurram, let's take a fast food chain in Pakistan, right? None of the fast food chains, right, could quickly process even a sandwich or a burger, right? So what happens is they think it takes 15 to 20 minutes to process a sandwich or a burger, not realizing that they are queuing up people, one thing, and they are unable to process quick. Probably उन्होंने एक बिजनेस प्लान बनाया हुआ है कि इतने बर्गर्स अ डे बेचने हैं, लेकिन अगर उस प्रोसेस को चेंज कर दें, राइट, और वो क्यूइंग उनकी खत्म हो जाए और लोगों को वो चीज जल्दी मिलने लगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस वॉल्यूम्स तेज हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ थिंग्स फॉर एनी बिजनेस, आप रिटेल ले लें, हॉस्पिटैलिटी ले लें, सर्विस इंडस्ट्री ले लें, लॉट ऑफ बिजनेस आर इनटू दैट। सेकेंड थिंग आई थिंक एजाइल में, बिफोर आई गिव यू अ लिटिल मोर, एजाइल का जो दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है वो डिजिटल अडॉप्टेशन का इस वक्त आ गया है। कोविड और आफ्टर कोविड, और आई वुड से प्री कोविड, उसमें जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बहुत बड़ी सेगमेंट है पाकिस्तान के लिए, वी हैव द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन. What we see is a lot of employees, especially for organization which is across nation, diversified workforce है, फैली हुई है बड़े शहरों में. आप एक ट्रेनिंग करा रहे हैं, एक ट्रेनर है, he is running around different cities and training people. Maybe one round of that training gets covered in like 20 days, right? So the last training was done at the end of the month. उसका आपने fruit नहीं लिया. अब हम डिजिटल अडॉप्टेशन या डिजिटल ट्रेनिंग की बात करते हैं, अगर हम उसके अडॉप्टेशन कर लें तो एजिलिटी आ जाएगी. आपने जिस दिन एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, उसी वक्त उसी लम्हे
उसी पॉइंट इन टाइम पे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हों, उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हुई, एंड your team is ready at any location at that same point in time. And if the organization is globally working the same point in time in different time zones as well, okay, again, because it would translate back into performance, it would translate back into the productivity of the organization. In our country, again, because we are stuck up, I would say, mostly into a conventional performance management. हम उस एक साल के इम्तिहान की बात कर रहे हैं, एक साल के असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हाउ we wait and see and then we visit. So that is a bigger challenge. For the sake of a better understanding of all the participants, and एक brief, एक छोटी सी presentation बनाइए. Let's go through that, and then I'll proceed further. However, at this point in time, तो कोई क्वेश्चन करना चाहे खुरम तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, then I'll proceed. जी, अभी तक किसी कैंडिडेट मैंने लिख दिया है ना, फेसबुक पे क्वेश्चन नहीं। अच्छा, एक चीज इससे पहले कि प्रेजेंटेशन में जाएं, क्या हम इसको कह सकते हैं इस चीज को, इसलिए कि हम दोनों बिजनेस उसमें हैं, कि एक्चुअली एजाइल मैनेजमेंट से हम टाइमली रिस्क भी कवर कर सकते हैं? रिस्क और रेक्टिफिकेशन, यस, रिस्क से रेक्टिफिकेशन, इसलिए कि इंस्टेड ऑफ गोइंग, मतलब जब वो इतना चीजों को ड्रैग हो जाए कि जब वो करेक्ट भी ना हो सके, इसलिए कहते हैं ना, मिस्टेक्स आर ऑलवेज वेलकम, बट टेकिंग रेमेडियल मेजर्स फॉर द मिस्टेक्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट उससे भी लिंक हो जाता है कि रेक्टिफिकेशन और रेमेडियल मेजर्स आप कर सकते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो बड़ी कभी कभी बड़ी चीजों को बचा जाता है, मतलब बड़े लॉसेस को, बड़े आप स्ट्रेटेजी चेंज करने को, इसलिए कि आजकल डायनामिक चीजें चल रही हैं, आपको इमीडिएटली स्ट्रेटेजी चेंज करनी है जिन हालात से। तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में बेनिफिट एजाइल मैनेजमेंट का, एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का वो भी होगा। I think again, not taking any names of the global best practices, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो देयर यूज्ड टू बी अ स्ट्रेटजी जहां पर प्रोडक्ट शुरू से एंड तक जाकर चेक होती थी क्वालिटी एश्योरेंस में, एंड देन 30-40 years from now, most of the industrial revolution told us no, each step should be quality assessed, right, so that you can check and return or reproduce or send it back at that step rather than आप पूरी प्रोडक्शन लाइन से उसको गुजार दें। तो आई थिंक एजिलिटी की अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बात करें तो वो तो 25-30 साल 40 साल पहले एक्सेप्टेड नॉर्म था, ठीक है, वो हो गया है, तो उसके एडवांटेज ही है, फ्रूटफुल एडवांटेजेस, लेकिन वेस्टफुल टाइम, वेस्टफुल रिसोर्सेज आर सारी चेंज हो रही हैं, तो हम एट अ सॉफ्टर साइड परफॉर्मेंस को उसी तरह मेजर क्यों नहीं कर सकते एट ईच स्टेप। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट पाकिस्तान में लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें एक न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, मेरे पास भी वो संभव गाड़ी थी, तो उन्होंने पाकिस्तान में प्लांट लगा दिया और सब कुछ हो गया, इवन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और उसका इंस्पेक्शन उसके बाद हुआ, एंड देन दे रियलाइज कि उन्होंने पेंट प्लांट जो है वो किसी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग पुराने प्लांट यूज कर लिया था, और देन दे स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान। तो बहुत बड़ा एक डिजास्टर आया, बट एनीवे हो जाता है। चले, ओवर टू यू। चले, आई विल शेयर माय स्क्रीन for all the participants. So I think Puram, आप देख सकते हैं स्क्रीन को? जी बिल्कुल नजर आ रही है, you can start. Okay, so these are the three things which we wanted to give. Where should you start with the agile performance management? What tools do you need to empower agile practices, and how should you implement agile performance? So three of the simple factors, keeping in view of a quick time for a webinar. So I'll cover these things. Okay, so the first perspective, just to give you a definition, is an approach to motivate employees' performance, nurturing employees' development, right? And align these two objectives and organizing personal goals. And the start of the year, we are writing SMART goals, objectives, KPIs, right? It's an approach we wrote it. Are they aligned? Can they be changed? Can they be aggressively be changed? That is the approach where we need to understand. I think it should be very simple approach, and it should be more transactional rather than it cannot be changed. Process revolves around continuously checks in, which often occurs on a monthly or a weekly basis. Why to wait? A lot of industries, why to wait for such a long time? Why can't we do it right there and then? Especially वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें
massive consumer base hai. Let me say, banking is a big industry, the retail banking or consumer banking. I'm unable to understand. The population is growing. We are the fifth largest population, but the queuing mechanism, standing of people, of lots of things are still there. The process of even a deposit of check is very primitive. Someone comes, someone writes a deposit slip, goes back. If you see a global industry, there are a lot of modular simpler, because at the same form needs to be retransmitted once it is on the counter. So from a very simple transaction to a business process, it can be checked. And finally, the objectives and key result, OKRs, right? Now, are we saying a strategy? Are we saying a bigger smart objectives? Or we are saying very smart objectives and key results, right? Simple things. 80% of the organization is generally or transactional, right? So you can strategize things for the 20%, but come up with smarter things, OKRs for the 80% of your workforce, and things would revolve around. Now, where we say, where should you start with the Agile, right? Mitigate your paper-based processes on an online platforms. What is stopping us? Most of the organization has adopted a lot of best practice ERPs, right? But if you deep dive into their organization, because being an HR consultant also, we go into the organization and see that there is a paper environment all the time. So that they are doing things on the digital space. And so I would say that there is a mismatch between the adaptation. Culture ways of feedback is welcoming. Feedback mechanism to change the process, to improve the process, and then minimize the time is the essence. Again, introduce organization goals, OKRs, track impact, productivity, and performance. Can it be measured? Can a number of transactions processed by each person can be measured? Yes. Let's take accounting. Can we manage an accountant? How many vouchers was prepared? How many dispatch slips was made? How many goods received notes were prepared? So you come up with a list, and you'll get to know that most of the things every day can be accounted for. A receptionist, how many calls received, how many calls replied, what was the essence can be seen. Map role based on a skill hierarchy and manage individual performance. Hierarchies are leadership hierarchies here, right? Why not work level hierarchy? So leadership hierarchy is to manage the team, but transactional hierarchy, the work related hierarchy, is the day-to-day business, right? Can we think of work hierarchies and switch priorities over formal reviewing to continuous coaching? Again, when we say assessment, इम्तिहान होता है. असेसमेंट से कौन को डर लगता है? हम स्टूडेंट्स थे, हमें भी डर लगता है. जब आप एनुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इवैल्यूएशन की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट एन असेसमेंट. इम्तिहान कितना स्कोर, कितना नहीं, 70%, 60%. लेट्स कम आउट. It should be all coaching, because at the end of the day, the objective of the manager and employee was not about how much score, is all about the business returns, right? तो अगर हम उसको assessment से निकाल कर we come up into an interesting model of coaching and counseling, it would be a better hand holding for the people. So I think that is where you should start. Think a transactional perspective. Think if the transactions are improved, overall numbers are improved, business is improved, the bottom line improved, the revenue is improved. The second things, what kind of tools you need to empower, right? So पहली लाइन में मैंने थोड़ी सी चीजें बताई. सेट योर ओन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्केड्यूल्स, टाइमलाइंस बनाए, ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड नोट्स फ्रॉम कन्वर्सेशन, जो आपने डिस्कस किया उसकी ब्रीफ नोटिंग करें. रिव्यू कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल गैप. कॉम्पिटेंसी स्किल गैप क्यों कह रहे हैं कि हमारे कन्वेंशनल परफॉर्मेंस के एंड ऑफ द ईयर हम बात करें ट्रेनिंग नीड और कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स की. यहाँ पर हम बात करें देयर एंड देन. इस पॉइंट इन टाइम पर आपको एक आदमी को एक नया सॉफ्टवेयर आया है, एक ईआरपी इंप्लीमेंट हुआ है, उसकी इस वक्त ट्रेनिंग होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अडॉप्टेशन. इट्स नॉट कि उसकी बिगर पिक्चर क्या है. लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड ERPs these days and very nice with a lot of globally tested features. You interview them, they are using maybe 4 or 5 because no one gave them the orientation of other thing. Gather 360 feedback.
listen to their perspective, because maybe a person on the cash counter or cash register or a service executive can also give you a lot of new techniques. And connect performance KPIs to relevant learning goals. Again, the thing is not that the learning is provided to weak performers. Learning is an ongoing process to be facilitated to everyone. So एक हम इसको कर लें. दूसरा, flexible learning management system, learning experience platform, upskilling your workforce and encouraging collaboration and engagement. सोशल मीडिया का दौर है, फ्रीवेयर्स में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं. लर्निंग को, फॉर्मल लर्निंग को इनफॉर्मल में ले जाएं, होम बेस्ड ले जाएं, वर्चुअल स्पेस पे ले जाएं, तो ऑल द टाइम थिंग्स वुड इम्प्रूव. Flexible working options. We are a population with 50+% of women folk. Lot of work can be done from there. Most of our urban cities are challenged with smog, smoke, traffic. Can we very simplify these the digital platforms and work from home, or common places? I would say common workplaces का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वर्किंग स्पेसेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वहां से ऑपरेट करें. तो आपको शहर के एक जगह से दूसरी जगह इसलिए नहीं आना कि आपका दफ्तर वहां है. ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉमिनली पे अब फॉर वर्क शेयरिंग वर्क स्पेस located near to your home if your home does not have a exclusive place. So those policies can come. And collaboration messaging tools, game changing for remote agile performance. Now remote में एक challenge यहाँ पर ये आ रहा है कि work from home में how would I be connected, right? But I think tele-density, connectivity, social media is so good, and there are so many interesting tools. So I'm not taking names of those interesting tools, which can exactly tell you what time you logged into your computer, what time you logged out, how many transactions you do. Start using those things rather saying कि यार वो तो घर से बैठ कर सो रहे थे and work from home नहीं हो रहा था. It is a new adaptation and we can all quickly adapt to those things. उसमें कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चैलेंज नहीं है कि हम उन टूल्स को ना करें. और जो टूल्स की बात करें, इसमें सारे टूल्स ओपनली अवेलेबल हैं, फ्रीवेयर्स में बहुत सारे अवेलेबल हैं. And the last thing, how should you implement a agile performance management process without destabilizing your existing system? किसी भी सिस्टम की अडॉप्टेशन के लिए थोड़ा सा चेंज को समझना पड़ता है, लोगों को सामने लेकर चलना पड़ता है और उसको उनको फ्रूट नजर आना चाहिए. So what I'm saying is start slow. For example, if you have one organization, don't make a strategy for all organization. Test the strategy within one department. Gather internal research and feedback. Change the process. If you are doing for your procurement department, right? Just go into your procurement, check into how the processes are done, at what stage each process can be measured for the individual productivity. So वो आपको measures वहीं से लोगों के नजर आने पड़ेंगे, नजर आ जाएंगे. और फिर उसके बाद आप उसको किसी एक डिपार्टमेंट पे लगाएंगे. आपने 2 से 3 महीने में उसके रिजल्ट्स देखे, and then you proceed. So one department, for example, now procurement is done, then you go to your supply chain or finance or retail or production. So one by one, if you do, and because we are trying to gather the number of transactions at each step, right? So simple mapping would help you. So if we summarize, start with Agile performance management methodology, which means each transaction at each level within a day, a time, a week, it should be measured, right? And to the frequent performance checks-ins. So frequent performance, it could be a daily check, weekly check, monthly check, and linked to the quality, linked to the quantitative aspects. So that's what we, because end of the day, these all clubbed in would give you the annual results. Establish objectives and key results. OKRs की को use करें, objectives लें उस point in time के. For example, international food chains has a processing time of a pizza or a burger or a delivery, right? Just imagine they have standardized that things. Can we do it at our workplaces? Yes, we can do it, right? Transactional time. A person who is coming to deposit a bill and the cash counter time, all those transactions can be captured and measured.
Practice continuous feedback. Keep taking how consumer wants. We should take an outside-in approach. What is our consumer wants? How do they like to get these things done? And then we proceed. Again, a 360 feedback. I think listening to a feedback and listening to sometimes criticism improves the scenario. Me and Khurram was saying across the world, most of the countries work till I would say sunset, right? I think we are an interesting country where we are struggling for electricity, but we start the day by midday and end the day by midnight. There are countries where you can't buy a very high voltage bulb, right, for your home use or an office use because they don't sell. You have to take special permission, right? We are a place where we see a lot of lights and all that, illumination till late hours. Small things make a change happen, right? Finally, use competency frameworks. Again, competency frameworks, I've been preaching, I do facilitate organization for competency frameworks. It is not a well-known principle, but in the international market, each department, each section has a very well-defined competencies, and those small competencies lead to skill development, upskilling of people, which leads to better productivity there and then. And the biggest thing is reduction in the error rate. The minimization of risks are done once our interesting competency frameworks, the skill competency frameworks are being made and adopted. And a very nice principle. And that leads to develop your workforce, because at each step, if the workforce is developed, you don't have to have inspectors of quality, checking, reprocessing, return, and all that. You minimize. So end of the day, very simple processes of Agile leads to a successful business, better qualitative and better quantitative returns at the least possible pricing model. So these were the three simple steps which I shared, and I'll open the forum to participants to ask. And I think Khurram would also have certain questions. Let's move from there now. Okay, thank you, Farhan. Thank you so much. Farhan, I think so जो audience है हमारी, और जाहिर बात है, मतलब no doubt कि we are discussing, but बहुत detail में. Just I really want you कि आप थोड़ा सा 360 feedback को explain कर दे लोगों के लिए. जब we know है HR term, और like बाहर की दुनिया में तो I remember 10 साल पहले, 12 से 11 साल पहले मेरी प्रमोशन थी तो 360 फीडबैक लिया गया था. तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें ताकि लोगों को एग्जैक्ट आ जाए, और इन टर्मिनोलॉजीज के पीछे छुप जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि है क्या चीज. Okay, the way I would describe 360 is not only an internal customer. I would say within the work environment, there is internal and external customer. One time we perceive 360 could be a boss and a subordinate. Okay, so we took a feedback from the boss and we took a feedback from the subordinate or the equal peers, right? So हमें एक perspective ये है. लेकिन अगर आप किसी भी consumer oriented business model में हैं, ठीक है, और आप उस feedback में उस outside consumer का feedback नहीं incorporate कर रहे, तो आपका business process तो चौकट ही रहेगा ना. So I think in that case you need to take the leadership perspective, your business perspective, your peers perspective, as well as certain level of feedback directly and indirectly. जिस तरह mystery shopping की हम बात करते हैं, all stakeholders, जिनका भी stake है, जो उस process का हिस्सा है, वो सबके सब से बिल्कुल. तो उसको हम लेंगे तो फिर हम अपने business को ज़्यादा interesting और enlightening कर सकते हैं, because end of the day, if it's a business model, it goes back to the bottom line of revenue generation, and revenue comes from your customers, the stakeholders. So I think that is a collective effort. So performance management, by all means, from my perspective, is completely a holistic perspective. It is not internal perspective. However, before I proceed, there are organizations in Pakistan where I've seen that performance management bahut acha ho raha, annual performance reviews, bonuses, everything. And 3 years later, we heard, oh, the company collapsed, it is going down, or it's closing, or it is for sale or merger. I question
what was the HR practices, because if the things were happening so wow, what happened? So I think that there is a deep dive which HR professionals need to see, that is the company progressively year by year growing, and is that growth correlating with your performance? Then it is a successful performance management system. सस्टेनेबल स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फारूक रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, अगर आप सुन रहे हैं और फिजिकली अवेलेबल है तो प्लीज अपना माइक और कैमरा ओपन करें, आपसे भी डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फारूक रंधावा साहब, अनदर एचआर प्रोफेशनल फ्रॉम लाहौर। नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, सेम हियर जी। फारूक रंधावा, आज फरहान साहब हमें एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी कि कन्वेंशनल से क्या डिफरेंस है, क्यों जरूरी है, टाइमली एजाइल परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी और स्विफ्टनेस। तो इसमें अगर आप कभी हो तो एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाएगी। नहीं जी, आई एम मच एक्साइटेड एक्चुअली। फरहान साहब ने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए, असल इशू यही है कि वंस बीइंग एन एचआर, इफ वी आर कैपेबल एनफ टू एक्चुअली अलाइन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद व्हाट वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ आवर एम्प्लॉइज, तो आपकी जो है ऑटोमेटिकली उसमें जो डेवलपमेंट पार्ट है, उसमें जो उसको एक फीडबैक एक्सेप्टेंस वाला कल्चर क्रिएशन है, दे ऑल एक्चुअली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। बट इफ द मेन जो आपके एरिया है जहां पे आपने अलाइनमेंट क्रिएट करनी, अगर वही आप नहीं कर पा रहे होते तो फिर उसके बाद जो बाकी आपकी सारी चीजें वो इतना अहम नहीं रह जाती हैं, क्योंकि बेसलाइन अगर आपकी गलत हो गई है तो ऑफ कोर्स फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बायसनेस वाले इश्यूज भी जो हम अक्सर सुनते भी हैं एम्प्लॉइज से, जी ये जो है मतलब इवैल्यूएशन तो होगी बट नॉट अकॉर्डिंग टू द आवर परफॉर्मेंस और द अदर वंस परफॉर्मेंस। ओके, थैंक यू फारूक। फरहान साहब, एक क्वेश्चन आया, हाउ टू डेवलप ओकेआरस, प्लीज शेयर एग्जांपल्स एंड शेयर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स तो इदरीस साहब इस वक्त हम शेयर नहीं कर सकते, बट अगर आप ईमेल करें प्रोजेक्ट@टीएस के डेवलपमेंट में आपको मिल सकते हैं। यस, ओकेआर के बारे में जर्नल्स जो है चीज एग्जांपल के साथ मैं फरहान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर बताइए। सिंपल बात है, आपको कोई भी चीज प्रोसेस करनी है, आपने एक स्मार्ट गोल लिखा था, OKRs ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स, अगर आप उस गोल को सब डिवाइड करें ईच प्रोसेस में, राइट, एंड आप उसको मेजर करना शुरू कर दें, तो आई वुड से यू विल बी एबल टू डिजाइन अ वेरी सिंपल OKRs. Let's take any industry. Let's even take if it's a textile industry. Yes, it could be a measure from making a cloth to the finished product, right? But within that, there are 5 or 6 transactions. Can each transaction can be divided and measured, that becomes an objective key results, right? And if all those transactions collectively add to the total number, right, it becomes your bigger key performance indicator or a benchmark, right, to achieve. But if the whole cycle is not being measured at each step and you are just waiting for the key performance indicator or benchmark to improve, probably you'll not be able to rate it unless you are a very mature, organized business model. So I think OKR is a more simpler transactional measures, right, which is I would say subset to lead to a KPI. ओके, जिन लोगों को OKR से अगर है तो OKR इज ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट अंदाज में एक्सप्लेन करता हूँ। फरहान साहब इज एचआर प्रोफेशनल, फारूक साहब एचआर प्रोफेशनल है, मैं फाइनेंस एंड बिजनेस प्रोफेशनल हूँ। देखिए, ट्रेडिशनली क्या होता था कंपनीज में, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आप लोगों का क्वेश्चन जनरेट हो सके, इसलिए मैं उसको डिफरेंट लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि एक कंपनी आती थी, वो बजट बनता था। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं बिजनेस कैलेंडर ईयर की, जनवरी से दिसंबर, तो बजट बनते थे अक्टूबर में, सितंबर में स्टार्ट होते थे, नवंबर में जाके बजट से मीटिंग होती थी, दिसंबर में बजट फाइनल हो जाते थे, और उसके बाद बजट बन गया, बजट टीम को दे दिया और इंडिविजुअल केपीआईज मिल गई। हम बैलेंस स्कोर कार्ड्स पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज्यादा काम नहीं होता, या जीएसएम वगैरह पे ज्यादा काम नहीं होता। तो उसके बाद ये चीजें होती थी और साल के एंड पता चलता था कि जो हमने बजट बनाया था उसमें ऑब्जेक्टिव ये था और हमने अचीव ये किया, गैप इतना ज्यादा आ गया। और मैंने ये चीजें एक्चुअली लाइफ में, इसलिए बिजनेस में रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह जॉब्स की है, तो देखी भी है कि जी साल के आखिर में आके नवंबर में जाके जब अगला बजट बन रहा होता था तो रिव्यू करते थे कि पिछले बजट में तो इतने गैप्स हैं,
क्यों थे, फलाने ने कम किया, उस डिपार्टमेंट में कम किया, वहां से सप्लाई चेन का इशू आ गया, ड्यूटीज चेंज हो गई, परचेजिंग में इशू आ गया, प्रोडक्शन सुस्त रही, सीजन चेंज था, लेबर नहीं मिली। और नवंबर में या सितंबर में जब अब बजट का प्रोसेस नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट करते थे तो रियलाइज होता था कि जी जो लास्ट ईयर हमने बजट बनाया था वो तो कहीं और ही है, हम तो बहुत दूर है। फिर चीजें क्या हुई उसके अच्छा इसी हवाले से जब इंक्रीमेंट्स की बात आती थी, जब पर्सनल एवल्यूशंस होती थी, रिव्यूज होते थे इंडिविजुअल्स के साल भर क्या किया। अच्छा मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर खित्ते के लोग हैं, नॉट पाकिस्तानी नॉट इंडियंस, उनका ये होता था कि पूरा साल वो कुछ करे ना करे, आखिरी 3 महीने बेहतरीन किस्म का उनकी परफॉर्मेंस होती थी, उनकी प्रेजेंटेशंस कमाल की होती थी। मैं ऐसे कॉलीग्स को जानता हूँ जो पैसे देके प्रेजेंटेशन बना लिया करते थे और उसके बाद उनका साइकिल निकल जाता था, अगले 6 महीने 8 महीने उसी के खाते रहते थे। बट बिजनेस को लॉस होता था, बिजनेस सफर करता था। क्यों? इंडिविजुअल आए, अपनी कहानी सुनाई, आगे चले गए, मगर उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते थे, रेमेडियल मेजर्स आप नहीं कर सकते थे। जब आप सितंबर अक्टूबर में आपको पता चलेगा कि 10 महीने के ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, लूज हो गए, पूरे नहीं हुए, या जिस तरह चाह रहे थे वैसे नहीं हुई, ये गैप बहुत ज्यादा है, एक्सेप्टेबल गैप से ज्यादा है, देन फिर क्लास होती थी, फिर सुनवाई होती थी, क्या था, क्यों गलत था, कैसे, उस वक्त क्यों नहीं बताया। बट कोई सिस्टम नहीं होता था जिस वजह से इसलिए परफॉर्मेंस होती बाद में थी। इवन एम्प्लॉइज हैं, उनको फीडबैक देनी होती थी, तो एम्प्लॉइज को साल के एंड में बताते थे कि यार तुमने जनवरी में ये खराबी की थी, मार्च में तुमने ऐसा किया था, अप्रैल में तुमने ऐसा किया था, तुम तो बहुत बुरे हो। और वो कहता था जी सॉरी गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। बट पॉइंट ये होता था क्या उसका फायदा किसको हो। चले आपने फीडबैक भी दे दिया, एज ए सुपरवाइजर है और एज ए जूनियर है, सो आपको फीडबैक भी मिल गया, बट उसका फायदा क्या, जो चीज गुजर चुकी आप फिर भूल जाएंगे। जब एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात हुई और ये चीज हुई, और पाकिस्तान में तो अभी तक जो है वो 100% नहीं आई, तो वो हुआ कि नहीं ऑन द स्पॉट चीजें करें। दूसरी बात ये कि जो फीडबैक था, एजाइल इज ऑल अबाउट कैडेंस, फ्रीक्वेंसी, कि आपने फ्रीक्वेंट फीडबैक देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक को, जैसे असेसमेंट की बात थी, आपने उसको जान का मसला नहीं बनाना। और फ्रीक्वेंट असेसमेंट का फायदा क्या होता है, इसलिए कि हमने लोगों को मेमोराइज नहीं कराना होता चीजों को। अब आप देखें इंटरनेशनली तो स्टडीज के भी ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए, स्टडीज के भी असेसमेंट के प्रोसीजर चेंज हो गए। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, मेमोराइजिंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। आप लर्न करते हैं, आपकी असेसमेंट होती है, आप उस चीज पे अबूर हासिल करते हैं और आगे चलते हैं। आप उस चीज को देखें, जो भी आप पढ़ लें, अगर आपने पूरा मेमोरी, अगर आप हाफिज कुरान भी है ना और अगर रेगुलरली उसको नहीं दोहरा रहे तो आप वो भी, उसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बेताशा हाफिज कुरान है, जो नहीं दोहराते वो भूल जाते हैं। तो मेमोरीज को चैलेंज नहीं करना, लर्निंग को चैलेंज करना, स्किल डेवलपमेंट को चैलेंज करना है। तो एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जहां पे उसकी आमद हुई और उसका जो फायदा हुआ कि आपने पीरियड ब्रेक्स ले लिया, आपने चीज हुई, आपने परफॉर्म क्वार्टरली पे चले गए। और जैसे फरहान साहब ने बताया कि बेताशा टूल्स है जिनको यूज कर सकते हैं। तो चले आज से हम 8-10 साल पहले तो एक्सेल पे चीजें बना रहे होते थे, गैंट चार्ट्स बना रहे होते थे और चीजें बना रहे होते, अब तो टूल्स भी मौजूद है, खासतौर पे आफ्टर कोविड तो बहुत चीजें होंगी। पर्पस क्या था कि परफॉर्मेंस ज्यादा लेनी, द बेस्ट आउट ऑफ इट, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। लास्ट उसमें भी हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी कि किसी चीज में से उसका बेस्ट निकाल लेना। तो फ्रीक्वेंट रिव्यूज का फायदा ये होता है कि आप वक्त पे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपने चीजों में लैकिंग आ रही, मे बी आपकी अप्रोच गलत थी, मे बी जो सब मिलके सब तमाम बड़ों ने मिलके फैसला किया था या तमाम टेक्निकल लोगों ने, उसमें कुछ गैप था, वो अप्लाई नहीं हो सकता था, कोई नई चीज थी। जैसे प्रोडक्शन की मैं बात की, आपको मैंने एक एग्जांपल दे रहा था कि एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबको मतलब बेड़ा गर्क कर गई, उसकी जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट उसकी ठप हो गई। क्यों? उन्होंने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सके? सब कुछ रेडी किया, पेंट प्लांट उन्होंने को पुराना पड़ा था वो इस्तेमाल कर लिया। जब वो ओरिजिनल जिन्होंने लाइसेंस दिया था वो आए, उन्होंने आके कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी इस पेंट प्लांट पर नहीं कर सकते। क्यों? अगर ये प्रोसेस होता, वो भी सो रहे थे, अगर एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के तहत होता, तो जब ये सारा काम प्रोसेस हो रहा था, जब 80% प्रोसेस कंप्लीट ठीक हो गया और 20% में लैकिंग थी, इन बिटवीन पीरियोडिक चेक्स हो रहे होते, फ्रीक्वेंट चेक्स हो रहे होते, तो ये कहानी ना स्टार्ट होती, वहीं के वहीं चीजें हो जाती, या तो बाकी काम रुक जाता, या जो 20% काम जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया वो भी ठीक हो जाता। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो असेसमेंट है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आपकी चेक्स हैं, आपकी असेसमेंट्स हैं, आपकी फीडबैक्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर हैं एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। फरहान ने बहुत डिटेल में उस प्रेजेंटेशन के साथ हमें बताया। 360 के बारे में बात हो गया। क्यों 360 फीडबैक? अगर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात करें, आपका सीनियर, आपका जूनियर, आपका कॉलीग, सबसे बारे में किया जाता है कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग। नॉट कि आपको करें, बट ठीक है अगर आपको इंप्रूव करना है तो आप जब भी इंप्रूव कर सकते हैं जब आपको लैकिंग पता चलती है। सिमिलरली जहां कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं तो कस्टमर से देखा जाता है, सप्लायर से देखा जाता है। 360
फुल सर्कल कि आपकी हर तरफ की चीजों के आपको परफॉर्म किया जा रहा है कि जी आप क्या कर रहे हैं, आपके जो सप्लायर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन, आपकी वायरिंग जिसको बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, नेटवर्किंग और वायरिंग की बात करते थे कि वो कैसी आपकी चल रही है। तो ये चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का क्वेश्चन है इन केस, अच्छा एक क्यूरी आई है मैं बता देता हूँ आपको, जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था ओकेआरस के बारे में, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और ऐड कर दूं, जी प्लीज। फोरम ने बताया कि बिकॉज जब आप उसको एक बिगर प्रोसेस को चंक्स में डिवाइड कर लेंगे, और जितना इन्होंने बताया कि साल के आखिर में आप कह रहे हैं वो चीज नहीं हुई थी, तो आपके पास उसका एग्जैक्ट मेजर होगा किस चीज को रेक्टिफाई करना है, वरना एक ब्लेम गेम रहेगा। तो ओकेआर जब हम बना लेते हैं या एक बिगर प्रोसेस को फर्दर ट्रांजेक्शंस में मेजर कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है किस पॉइंट पर इस चीज को रेक्टिफाई करना है, तो सिंपल हो जाता है रादर देन गोइंग अ डिपार्टमेंटल ब्लेम one process at one point in time or one chunk of things, if repaired, rectified, improves the whole things। वो बड़ा सिंपल हो जाता है एजाइल की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद। ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा एक चीज मुझे बताइए इमरान साहब, अगर कोई एक्सटर्नल हेल्प लेना चाहे, मिसाल के तौर पे कंपनी है, वो कैसे इस चीज को उसको ऐसे मतलब जाहिर बात है बहुत मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है, एक नया तरीका है। अगर एक कंपनी है जैसे एक एंटरप्रेन्योर है, एक कंपनी स्मॉल मीडियम साइज कंपनी है, उनको दे रियली वांट टू शिफ्ट ऑन अजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो चाहते हैं कि वो शिफ्ट कर जाएं, वो कहाँ से स्टार्ट करें, वो अपने आप को क्या कैसे एनालाइज करें ताकि वो डिसीजन ले सके कि जी डू वी नीड टू शिफ्ट। कभी कहीं कहीं जो कन्वेंशनल तरीका होता है वो बड़ा अच्छा चल रहा होता है, वो कहते हैं जी 100% एवरीथिंग इज परफेक्ट, हम तो चला रहे हैं। होता भी ऐसा है, जाहिर बात है, हर जगह कुछ चीजें सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो एक नॉर्मल कंपनी एक है या तो वो कैसे अपने आप को एनालाइज करे, क्या उसको हम ये कौन सी ऐसे स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस वो करे अपना कि उसको रियलाइज हो कि नहीं, मगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ, चीजें करता हूँ, तो मैं फर्दर इंप्रूव कर सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि चीजें गलत चल रही है, इट्स अबाउट कि हम मजीद बेहतर करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा प्लीज डिफाइन कीजिए। आई थिंक उसमें पहला स्टेप तो ये रियलाइजेशन है दैट डू वी नीड टू इम्प्रूव, सबसे पहली बात होती है। बीइंग अगेन आई वुड से सच अ थिकली पॉपुलेटेड कंट्री एंड प्रोग्रेसिव, राइट, तो ये तो हमें यकीन करना चाहिए कि यस देयर इज ऑलवेज प्लेस टू इम्प्रूव। ठीक है, तो पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोचें, जब आप इम्प्रूव करेंगे तो फिर आपको डीप डाइव करना है किस चीज को इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब आप एक बहुत बड़ा माइलस्टोन लें कि इस चीज को इम्प्रूव करें, ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स लें। तो हम एजाइल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं लेट्स स्टार्ट स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, हम स्मॉल स्टेप्स से शुरू करते हैं और वो देखते हैं कि क्या चीज कितनी क्विकली डिलीवरी। इस वक्त आप देख लें देयर आर होम डिलीवरी मॉडल्स इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज द डिलीवरी टाइम फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी? ठीक है, अच्छा होम डिलीवरी या ऑनलाइन वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत मेच्योर हो गई है, वो एग्जैक्टली आपको बता देते हैं कि आज आपने बुक कराया 36 आवर्स में, 24 आवर्स में वो होगा। अभी हमने वो यहाँ पर नहीं की, ठीक है, कोई मेजर भी नहीं करा, लेकिन जिस दिन किसी एक आदमी कंपनी ने वो चीज को मेजर करना शुरू कर दिया, आई कैन वाउच they would lead the market. Let's take courier. There was a time when there was postal industry, then the courier came in. इस वक्त few of the top couriers are known for the timely delivery, their timely tracking and the transactions, right? So you can track, right? So again, छोटी सी बात थी, ट्रैकिंग करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, मेजर करना है किस वक्त पे किया, किस वक्त डिलीवर किया। So they are still the leaders, right? So I would say कि किसी भी कंपनी को अपने छोटे छोटे प्रोसेसेस को देखना है, डीप डाइव करना है, प्रोसेस इंप्रूव करने, और उन स्टेप्स को करते जाएंगे तो इवेंचुअली बिगर रिजल्ट्स आ जाएगा, रादर देन कि आप बहुत बड़ा ख्वाब देखें कि हम $X million कंपनी बनना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक स्टेप्स एंड थिंग्स वुड इंप्रूव अपॉन। जैसे हमारी बैंकिंग है, मतलब देखा जाए अगर पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम जो है और पाकिस्तान में जो बैंकिंग नेटवर्क है वो दुनिया के बहुत मुल्कों से बहुत बेहतर है। बड़े डेवलप कंट्रीज में जो बैंकिंग है वो बड़ी कन्वेंशनल है और उसमें बड़ी हिंड्रेंसेस आती हैं। मतलब पाकिस्तान में बैंकिंग बड़ी स्विफ्ट हो चुकी है और मतलब इश्यूज आते हैं, आई अंडरस्टैंड इश्यूज आते हैं, एप्स डाउन होते हैं, मगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो गई है, ट्रांजैक्शंस बड़ी कंपैरेटिवली आसान हो गई है। तो वो भी एक्चुअली मेरे ख्याल में इसी
एजाइल परफॉर्मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से किया, या इवन हमारे जो बहुत सारे मोबाइल कंपनीज है टेलीकम्युनिकेशन में जो एप्स काम कर रहे हैं कि आपको वेंडर के पास जाके पैकेज लगवाना पड़ता था, वो आप एक ऐप खोलते हैं, चीजें हो जाती हैं करने के लिए। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। डेफिनेटली वो इंप्रूव कर रहे हैं, रेगुलर चलाते हैं। डू यू थिंक दे आर द राइट, दिस इज द, हम एग्जांपल दे सकते हैं उसको कि ये इसके एग्जांपल? बिल्कुल। आप मल्टीपल इंडस्ट्री देख लें, माइक्रो फाइनेंस की आप इंडस्ट्री देख लें। माइक्रो फाइनेंस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स या सिमीज के जो मॉडल्स हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी ज्यादा आई है। एक नॉर्मल छोटा सा कंज्यूमर कैन गो एंड गेट मनी थ्रू अ मोबाइल ऐप, राइट? he is no more obliged to go to open an account and all those things. Convenience हुई, ट्रांजैक्शन मेजर हुई। लेकिन आज अगर हम देखें एट द बैक एंड, वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस बनकर उन माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लिए मिलियंस ऑफ रुपीस या मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है? तो दोज बैंक्स आल्सो बिकेम सब्सटेंशियल प्लेयर्स इन द मार्केट, राइट? So did they started though big? No, they started with a very nominal transactions. It made it happen. Let's take from the cellular industry. I've been working for cellular industry for multiple years. Scratch card, right? अब तो 100 रुपए का भी स्क्रैच कार्ड मिलता है, लेकिन वो स्क्रैच कार्ड कहाँ मिल रहा है? एक नॉर्मल पान की दुकान से लेके छाबी वाले। लेकिन अगर आप उसके ट्रांजेक्शन्स देखें तो उस आदमी से पूछें कितने बेचते, तो वो कहेगा इतने थाउजेंड्स में स्क्रैच कार्ड बोले। तो अगर उसका बहुत नॉमिनल सा भी उसका मार्जिन है, बट द वॉल्यूम takes it all. So everything can be measured then. So if you start measuring, so you don't have to establish 1 million investment. You come up with the small things. In Pakistan, everything has so many small things which can be measured and which can lead to big returns. और उसके ऊपर हमें और करना चाहिए। जबरदस्त। It is. So a message to everyone जो हमारी ऑडियंस है, कि अगर आप जिस भी पोजीशन पे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप उस टीम का पार्ट हैं, तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आपको अगर अपनी चीजों को आगे लेके चलना है, मे बी आप बहुत सेटिस्फाइड हो अपने काम से, अपने सेटिस्फाइड आप हो, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आपने इम्प्रूव करने का हमेशा गुंजाइश होती है। तो आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर अगर आप चाहें कि आप उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। होता क्या है, एक बाप बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके बाद उसके 3 बेटे आते हैं, उसके बाद उनके बच्चे आते हैं, तो बिजनेस साइज एक्सपेंड करना होता है। तो कहाँ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? और आजकल इस पे बड़ा अक्सर लोगों से मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं जी बिजनेस को हमने आगे लेके जाना है, हमने वॉल्यूम बढ़ाना है। कल मेरे पास एक ज्वेलर आए हुए थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, ज्वेलर आए हुए थे, दे आर खानदानी ज्वेलर है और लाहौर में उनका बहुत बड़ा आउटलेट है। उनका कहते हैं जी फर्दर एक्सटेंड, एक भाई उनके जी इसने एमफिल मैथ्स किया था, बट हमने इसको फैमिली बिजनेस पे लेकर आए, तो हमने इसको ऑनलाइन का काम दिया। तो वी रियली वांट हिम टू ग्रो। हम चाहते हैं कि रूटीन बिजनेस तो हम तो बाकी 2 भाई चला रहे हैं, तीसरा भाई आया है, उसका बिजनेस है, ही इज हियर, बट वी वांट कि वो ज्यादा बेहतर हो। और जब बात होने लगी तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने ये भी स्टार्ट कर दिया, हमने सोशल मीडिया पे भी स्टार्ट कर दिया है, इट्स गोल्ड। तो सारी बात है, गोल्ड की सोशल मीडिया या ऑनलाइन सेल नहीं होती, बट वो स्ट्रेटेजीज अपना रहे थे। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक बात की कि जी हम देख रहे हैं कि कहाँ लैकिंग है, कहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट रोल में हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपने आप को फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसकी हमेशा गुंजाइश होती है, आप किसी भी पोजीशन में हो, आप एक रोल प्ले कर सकते हैं। एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स और चीजों को राइट टाइम पे एनालाइज करके उसको आगे लेके चलना कि ठीक है सब कुछ, या उसको करेक्ट करना, या ऐसे डिसीजन लेना जिससे वो मजीद बेहतर हो सके। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि स्विफ्टली एंड स्पीड के साथ। एजाइल का लफ्ज ये है कि आप अपनी एक आप आउट स्मार्ट कर सकते हैं, आप स्मार्ट मूव जो कर सकता है। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आप इस चीजों पर तवज्जो देंगे तो आप गलती भी करेंगे तो उसको सुधारेंगे। आप एक प्रोसेस पे जा रहे हैं, आप अश्योर होंगे कि जी ये मैं ठीक कर रहा हूँ काम, मैं गलत तो नहीं जा रहा। मुझे बहुत आगे जाके पता चला कि पिछला जितना मैंने काम किया, होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि जी लोग काम कर रहे होते हैं, उनका काम जब खत्म होने वाला होता है, खत्म हो चुका होता है। थीसिस की बात ले लें, हम एजुकेशन की बात करते हैं, लोग थीसिस कर रहे होते हैं। अब थीसिस में अक्सर ये होता है कि जो इन बिटवीन जो आपका जिसके साथ आप अटैच है, कंसल्टेंट है, तो वो इनिशियली नहीं देखता, जब थीसिस मुकम्मल हो जाते हो कहते सब गलत है। देन इट मीन्स कि आप कितने अरसे के पीरियड्स आए हुए, एनर्जीज आए हुई, पैसे आए हुए। एजाइल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई हो सकती है। वहां पे आपने टाइमली डिसीजंस लिए, आपने स्टेप्स में बांटा और उस चीज उसको देखा कि जी मैं ठीक तरफ जा रहा हूं कि नहीं जा रहा।
आपने जो फ्रिक्वेंसी है चेकिंग करने की, असेसमेंट की, उसको रिड्यूस कर दिया। आपने साल का इंतजार नहीं किया, आपने एक पीरियड बनाया, ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखे, जैसे फरहान साहब की प्रेजेंटेशन में था, आपने लिखे और आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहे, चैलेंज करते रहे, अपने आप को चैलेंज करते रहे, रिजल्ट्स को चैलेंज करते रहे और अश्योर किया कि जब आप जो सफर आपका चल रहा है आगे, जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, वो एक सक्सेसफुल तरीके से इख्तिताम को पहुंचे। ठीक है फरहान, क्वेश्चंस हमारे पास सच नहीं आए कोई, लोग जो है मेरे ख्याल में दे आर एब्जॉर्बिंग। I'll just give one point. जी Very recently, there's a global sports going on, and one of the item is made in this country, and a lot of that effort is made by hand, right? Just imagine, we have such a great potential to strategize each step of quality assurance. So if we are into export of one product, you can reach to multiple other products because we have resources. The only thing is those small quality steps. Few investors or few exporters made it happen. They are very successful. Others need to follow. So एक स्पोर्ट्स की बात हो रही है, दसियों और स्पोर्ट्स हैं, इसमें दसियों और चीजें जा सकती हैं। बनाना हमारे हुनरमंद लोगों को आता है, रॉ मटेरियल हमारे पास है, हुनर है। It's just a process improvement to be measured there and then, rectified there and then we are ready to fly. As a nation, we could be extremely successful if we take very small steps with an ehsas. Yes, we can improve, and things would be better for everyone. That's Exactly. all from my side. देखें, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं और शिकवा करते हैं कि जी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे पास मेयर्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम कुछ फील्ड्स हैं हम प्रोस्पेर नहीं कर पा रहे। तो पॉइंट ये होता है कि इस देखें, रियलिटीज तो रियलिटीज होती है ना, कुछ चीजें हैं, मतलब हम अगर पाकिस्तान पीछे है तो पीछे है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है तो भी ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम प्रोस्पेर करने के लिए, जैसे भी फरहान साहब ने बताया, प्रोस्पेर करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपना मुवाजना करें। ठीक है, आप अपना मुवाजना करें चीजों को। जब एक चीज में हम जा सकते हैं, अगर एक जो सबसे फेमस फुटबॉल इवेंट चल रहा है उसमें आपका मेन चीज, जो उसकी मेन चीज है वो पाकिस्तान से जा रही है, तो इसका मतलब है कि ट्रस्टवर्दी है, हैंडमेड काम हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास कि जो मेन आपका इवेंट हो रहा है स्पोर्ट्स का, उसमें जो मेन जिससे खेला जाता है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है और बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है उसको। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है। और हमारे पास वो लोग हैं, और एक शहर है पाकिस्तान का जहाँ पे काम होता है, तो हमारी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पाते, हम क्यों अपनी क्वालिटी के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते, क्यों हम ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं जाके, उसमें हम इन चीजों पे तवज्जो नहीं देते, हम स्टेप्स पे तवज्जो नहीं देते, तो हम इम्प्रूव नहीं कर पाते। हम बैन हो गए, हमारा मुल्क बहुत सारी चीजों में एक्सपोर्ट पे। इसलिए एक मुल्क के म्यूजियम में आज भी एक ईंट रखी हुई है और उसको पाकिस्तान से वो कॉटन एक्सपोर्ट का नाम देते हैं कि जी पाकिस्तान से जब कॉटन आई थी तो उसमें ईंटें आई थी कॉटन बेल्स के अंदर, तो आज भी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना मुवाजना नहीं करते। कभी कुछ गलतियां इंटेंशनल होती हैं, हम बुरी नीयत की बात नहीं कर रहे, जो बुरी नीयत है वो तो बुरी नीयत रहेगी, उस पर तो हम क्या कह सकते हैं, बट देयर आर प्रोसेसेस व्हिच कैन बी इम्प्रूव्ड अगर हम टाइमली इन चीजों पे काम करें। और जब चीज हो जाए उसके बाद उसका फायदा नहीं होता। तो जब आप इन बिटवीन स्टेप्स पे लेते हैं तो आपके पास रेक्टिफाई करने का, चीजों को ठीक करने का टाइम होता है। इसके साथ हम आज का सेशन क्लोज करना चाहेंगे। फरहान, लास्ट 1 मिनट कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं तो उसके बाद हम क्लोज करें। Thank you all for participating, and I think we conclude that performance is a collective thing, from leadership to a junior. Collectively, we can make it happen and make our country and ourselves successful. Thank you. Great. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट। आपको ये सेशन फेसबुक पे मिलेगा, फेसबुक पे लाइव भी आ रहा था, रिकॉर्डेड वर्जन फेसबुक पे हम लोड कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फरहान साहब, फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना कीमती टाइम देने का और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने का। थैंक यू सो मच।